Hello everyone, welcome to Drishti CUET and welcome to your GAT Science classes. So guys, this is your second class for GAT Science, and in this science section you are going to cover all your physics, chemistry and biology. Already we have done first part of your physics where we have covered the basic physics like Newton's laws of motion, work, power, energy, force, gravitation. So we have covered all the concepts behind this, and also I have shared a list of formula, right, which is important for your exam. If they will ask you a numerical with those formula only, you are going to get the questions, right. In this continuous to that session only, we have left with one topic, that is wave. So first of all, today we'll cover that wave, and then we are going to cover the remaining portion of your physics like light, reflection and the reflection part, then human eye, electricity, current, potential difference, Ohm's law, series and the parallel circuit, magnetism and electromagnetism concept, magnetic effect of electric current. So these are the concepts we are going to understand in this particular session. Again, at the end I will share you a list, formula list related to these concepts. So if you will get questions like numerical based, so from those formula only you are able to solve all the questions, right? I hope the previous lecture is like quite easy for all of you. You have understood the basic concept behind work, force, power, energy, what does these meaning, right? So now we are left with the waves only. So let's go with the wave first of all. So first of all we'll cover here wave, and then we'll move to the light and other topics, right? Now let us understand what do you mean by wave. See what happened now. Our light, right? Light, you all know that coming from the sun only, right? So when the light comes from the sun now, it has two, via two way it comes. Like once it comes like a straight line, and also the light comes like a wave. Okay, so what you can say that if the light rays reaches to any surface in a straight line, that you will understand in the ray optics, where you have learned the phenomena like reflection, refraction kind of thing. Okay, but when the light comes in the form of wave, right, whenever the energy comes in the form of wave, then you just say that you have learned the phenomena like interference, diffraction, polarization. These are the properties of light when it comes in the form of wave. So actually wave is what, or you can say light is actually what? It is just the energy particles, right? What is light? They are nothing but the energy particles, the packets of energy coming from the sun in the form of light. So similarly, wave is also what? The disturbance carry energy from one point to another without the transfer of media is known as a wave. So now that energy, when transferring from one place to other place, that will take the form of wave only. Okay, like suppose you have a water, you have seen like the wave coming in the sea. That is also what? That is also the energy particle, the energy which force the water particle to move from one place to another place, and it takes a shape of wave. It takes a wave like direction. Okay, so this is called as a wave. क्या होता है wave? The disturbance which carries energy from one point to another without the transfer of media, right? Here no media is not going to transfer. Like if you have a sea, or suppose if you have a river, it's not like na ki if the wave coming in the sea, then the sea reaches to whole city. It's not like that na. It will come till where this the sea, and again it will go back. So what happens? The wave, it is the disturbance of the disturbance which carry energy from one point to another without changing the media, right? Then wave is further
classified as mechanical wave and transverse wave, okay, or you can say non-mechanical wave. So these waves are further classified as mechanical and non-mechanical. Mechanical waves are those waves which require medium, right, which require particles to move from one place to another, right, but non-mechanical waves required no medium. Medium क्या होता है? What do you mean by medium, guys? Like solid medium, liquid medium, gaseous medium, ये सभी क्या है? Mediums होते हैं, right? So यहाँ पे non-mechanical waves जो होते हैं, they require no medium. Everywhere they can go. Okay, so we have light rays, microwave, infrared, X-rays, ultraviolet rays, radio waves. See, these are the waves which do not require any media. ऐसा नहीं है कि जब liquid होगा तभी ये pass on होंगे, और in any solid media only they can pass, or only gaseous media they can pass. Everywhere they can pass out. Okay, but mechanical wave requires medium. Okay, and based on that particle, based on that medium particle, again here the mechanical wave divided into two types, transverse wave and longitudinal wave, right? Transverse and longitudinal wave. Now what is transverse wave? What do you mean by transverse wave? What do you mean by longitudinal wave? क्या होते हैं? See, in the transverse wave na, the particles, or you can say the wave movement perpendicular to the direction of the particle, and in longitudinal the wave is parallelly movement, right? Like example, ocean movement, whatever the wave you are seeing in the ocean na, that is transverse wave, and the wave you are seeing like the sound wave, that is parallelly they are moving, right? So they are longitudinal wave. Let me tell you the difference between longitudinal and transverse wave. Transverse wave shown like this. So whenever you will see the wave like this na, this is called transverse wave, which moves perpendicular to the particle. Now suppose this is the particle, these are the particles. So what happened? The wave is moving perpendicular to the direction of particle, right? This is called transverse. And in longitudinal, the wave is just moving parallel, right? The wave is just moving parallel to the particle, right? ये difference याद रखना है. Then particle vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. Clear? So here, whenever the wave moves, whenever the transverse wave comes, the particles vibrate in the direction perpendicular to the propagation of wave. So whatever is the direction of wave, the particle vibrate perpendicularly. Okay, here in longitudinal, the particle vibrate in a direction parallel to the direction of, propagation of the wave. So here the particles parallelly they just vibrate when the longitudinal wave comes out, right? Then crust and troughs are formed. This is called crust, this is called trough. Crust and troughs are found in case of transverse, whereas compression and refraction, see here the waves are compressed na, so compression, and then relaxation, refraction, compression, refraction, compression, refraction. So like in transverse wave you will get crust and trough, right? Similarly in longitudinal wave what you will get? You will get compression and refraction. Compression means if the particles are vibrating very closely to each other, then compression wave creates, and when they are very far from each other, then the refraction wave created. Okay, formed on the surface of solid and liquid. So here transverse wave you will get on the surface of solids and the liquid, like in the ocean,
right? Also in a solid surface you will get this transverse wave, but your longitudinal wave you will get everywhere, in solid media, in liquid media and in gaseous media all. Transverse wave may be elastic wave or non-elastic wave, right? It may be elastic or non-elastic. Longitudinal wave only elastic, right? That is mechanical, like sound wave, seismic wave, they are called mechanical. See, your light wave, don't confuse, it is mechanical also and non-mechanical also, you have learned na? So light wave comes in both the categories. Do not create pressure difference in the medium. Due to the transverse wave, no pressure created in a medium. Smoothly they are just moving. But here in the longitudinal wave, it creates a pressure in the medium. So these are the important differences between transverse and longitudinal. Try to memorize, maybe you will get a question directly from here. Now, the sound wave, which is very important for your exam. Most of the government exam you will get, sound, the question directly asked from the sound only. So what is sound? It is a type of energy made by vibration. So sound is actually what? It is a kind of energy only which is made by vibration. So whenever the particles vibrate, produces sound. Like suppose what happened, whenever you just hit any object, a sound produce. So what happened? Here when you are hitting, the particles present in the air, the particle present on the solid surface, they just started vibrating, and due to their vibration, they create sound. So that is what we call sound. Like suppose whenever, like we are also producing sound, na? I am talking. So you are able to hear me. So why I am able to produce sound? Because in our body also, in our neck, we have a organ called larynx, right? What is larynx? Maybe you have heard about larynx. Larynx, which is also called as sound box, right? So this larynx, whenever the air reaches into the larynx, na, the air, the air from the outside vibrate, and whenever the air vibrate, it produces sound. So how the sound produces? Whenever the particle vibrates, right? So जब भी particle vibrate करते हैं, produces sound, right? Made by vibration. Whenever an object vibrates, causes movement in surrounding air molecule. These molecules bump into the molecule close to them, causing them to vibrate as well. तो जैसे ही आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट किया, whatever the molecules and the particles are present near the air in their surrounding, all they started vibrating and they cause other atom and particle also vibrate, and due to this only you are able to hear voice, right? Now what are the characteristics of your sound, guys? Speed of sound. Now the question comes from here. The speed of sound in air is only 343 meter per second. But in water, the speed of sound is 1500 meter per second. In case of solid, it is 5000 meter per second. So any solid substance create more sound. है ना? अभी हवा में कुछ भी वाइब्रेट करेगा, you are not able to hear, right? In the liquid also, like you are able to hear the sound of the liquid. But if you are hitting, like कोई solid चीज टकराती है, तो बहुत तेज से sound आता है ना? So the speed of sound is maximum in a solid object as compared to liquid, as compared to air or gases. Now reflection of sound. Reflection of sound का मतलब क्या हुआ? Now suppose whenever the sound produces, right, this sound reaches and then it
it hit the plane surface, and again what happened? It bounced back. So whenever the sound reaches the surface and then bounce back, this is what we called reflection. रिफ्लेक्शन यही होता है ना कि कोई भी लाइट जब किसी प्लेन मिरर्स पे टकराती है, राइट, एंड देन वहां से बाउंस बैक हो जाती है, तो यू विल गेट अ रिफ्लेक्टेड इमेज. तो सिमिलरली व्हेनेवर द साउंड कोलाइड विथ अ प्लेन मिरर, it reflect back, right? So you will get a sound. That sound is called as a echo. और उसी को हम क्या कहते हैं? Echo कहते हैं. Echo क्या है? Sound heard after reflection, right? And it means minimum like 17 meter gap. तो अभी क्या है? अगर 17 मीटर का गैप होता है, like suppose you are producing a sound, okay, in the hill station. Whenever you shout, you are able to hear your sound back. So what happened? The gap is more than 17 meter only. And whenever you speak, then what happened? The voice reaches, it collide with the mountain, and again it come back to you. This is what we called reflection of sound, and this phenomena is called as a echo. So what you have to memorize for your exam, that echo is a reflection of sound. Okay. Now sonar uses ultrasonic sound for navigation and depth detection. So like inside the ocean, right, we have a pandubbi जिसको हम लोग कहते हैं ना. So like all the armies have their ship inside the river only. So how they navigate? Due to the sonar only, right? तो sonar क्या है? Produces sound. It recognizes the sound within the water, and that is the ultrasonic sound. It recognizes the ultrasonic sound within the ocean. So basically we have three types of sound wave. What are those? Infrasonic, sonic and ultrasonic. These are the three types of sound actually, right? Infrasonic sound is also called infrasound, okay, which is less than 20 hertz. ठीक है. सो जो इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है, जो साउंड होता है, वो बहुत कम, लाइक 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, ऐसे समझ लो. सो वी आर नॉट एबल टू हियर देयर साउंड, राइट. सिमिलरली ऑडिबल फ्रीक्वेंसी विच वी आर एबल टू हियर, जो हमें सुनाई देती है, right, that audible frequency of sound is lie between 20 hertz to 20 kilohertz. तो आपको ये याद रखना है. इंफ्रासोनिक साउंड जो होते हैं लेस देन 20 hertz. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है that is in between 20 to 20 kilohertz, and अल्ट्रासाउंड is more than 20 kilohertz. जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं वो 20 kilohertz से भी ज्यादा होते हैं. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक में फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है. लेस देन 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक, बिटवीन 20 to 20 kilohertz that is audible, more than 20 kilohertz ultrasonic. So these are the types. Infrasonic, it has frequency less than audible range. Sonic, it has frequency equal to the audible frequency, and ultrasonic has the frequency greater than the audible. So sonic is what actually audible frequency, right? Then less than 20 hertz. So what is this? This is less than 20 hertz. Types of sound में जो हमारे infrasonic है, this is less than between 20 to 20 and more than 20 kilohertz. Volcano, earthquake. So you are not able to hear the sound of earthquake. ना जब earthquake आता है हमें सिर्फ feel होता है. Actually we are not able to hear. So that sound is below 20 hertz. Human, animal, हम सब एक दूसरे की आवाज सुनते हैं ना. कोई डॉग बार्क करता है, लायन रोर करता है, हम शाउट करते हैं. वी आर एबल टू हियर ऑल दोस, सो वी कम अंडर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. अल्ट्रासोनिक लाइक बैट्स, सोनार, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है.
Then these are some of the these are the three state: solid, liquid and gases, right? And these are the medium and their speed of sound. So what you have seen in the aluminum, in case of solid, obviously solid has higher speed, right? हमेशा से sound की speed जो होगी solid में सबसे ज्यादा होगी, then liquid and then gas, right? तो यहाँ पे देखो solid में aluminum जो है सबसे ज्यादा स्पीड है 6420 मीटर पर सेकेंड. निकल, then after you have a nickel, then after you have steel, iron, brass, glass, like that. Similarly, in case of liquid, water, distilled water, ethanol, methanol, these are the speed of liquid. Then सबसे कम speed sulfur dioxide, then oxygen, air 340 मीटर पर सेकेंड. तो यूजुअली दे विल आस्क यू अ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एयर में, तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, स्पीड ऑफ साउंड याद रखना है. ये पूरा चार्ट आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज एनी एग्जांपल दे कैन गिव यू. ओके, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड? See, characteristic pitch. How you are going to define pitch, guys? Pitch basically depends on frequency. ये बहुत important है. सबसे पहले तो frequency क्या होता है? Frequency होता है the number of time the particles vibrating. ठीक है? Like suppose करिए कि यहाँ पे ये एक ऐसा wave है, right? Again same distance का जो wave है आपको ऐसे मिल रहा है. So यहाँ पे देखो बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेशन हो रहा है ना, वेरी फास्ट वाइब्रेशन. हियर द वेरी स्लो वाइब्रेशन, इट टेक्स मोर टाइम टू रीच हियर. सो मेनी वेव्स फॉर्म्ड विद इन देम. सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसी भी वेव की. अगेन व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जितना हाइट पे जाते हैं ना, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. दिस इज एम्पलीट्यूड. ओके, तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है. सिमिलरली कुछ वेव होंगी जिनकी एम्पलीट्यूड इतनी होगी. तो ये जितनी हाइट तक जाते हैं दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. एंड द लेंथ, दिस वेव कवर द लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ. लाइक सपोज दिस इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव. सिमिलरली सम वेव हैज वेरी लेस वेवलेंथ लाइक दिस. सो इनका वेवलेंथ देखो कम हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी, हाउ फास्ट द वेव इज प्रोपेगेटिंग, राइट? एम्पलीट्यूड, हाउ हाई द वेव इज रीचिंग. ठीक है, सो आवर पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. लाइक देयर आर few people which speaks very fast, है ना, फटाफट लाइक दिस वो बोलने लग जाते हैं ना, एकदम जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं. आप कहते हैं अरे भाई थोड़ा धीरे धीरे बोलो, समझ में नहीं आ रहा है ना. तो हम क्या कहते हैं? इनकी पिच बहुत ज्यादा है, राइट? सो पिच इज हाई ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी. तो जिसकी जितनी ज्यादा, सी अगर ऐसा होगा तो लो पिच, ऐसा है तो हाई पिच. तो जिनका हाई पिच होता है उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, साउंड जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. लाउडनेस क्या होता है? हम चिल्लाते हैं ना, कौन कितना तेज चिल्ला लेता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज ड्यू टू द एम्पलीट्यूड. जैसे सपोज अगर मैंने किसी मटेरियल को हिट किया, ठीक है, तो उससे साउंड क्रिएट हुआ. तो जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो जितनी तेज साउंड क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा किसके? एम्पलीट्यूड पे. इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. तो ये एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा उतना ज्यादा साउंड लाउड होगा. ठीक है, मोर द एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा ये लाउड होगा. क्वालिटी एंड टिम्पर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ साउंड. सो हियर quality and timbre depends upon the nature. See, this is the clear, this is mixed. तो आपको आवाज क्लियर नहीं आती है ना, कभी कभी रुक रुक के आती है. So that is the quality and timbre which depends on the wave form, किस तरह का वेव बन रहा है.
ठीक है. So these are the characteristics. Try to memorize. Most of the time in your exam you will get question directly like pitch. Sound pitch depends on what? Loudness is due to what. Okay. So that is all about your your waves. Again, the another topic in the physics you have to cover is light, right? Under the light you have to learn two phenomena, reflection and reflection. Reflection and refraction. Okay. And this reflection and refraction you are going to learn in mirror and lenses, right? अभी सबसे पहले light होता क्या है? What are the properties of light? So first of all, your light can travel in a straight line. ठीक है, हमारी जो light होती है वो straight line में travel कर सकती है. Also it can travel in a wave form, but initially it was known that it can also travel in a straight form. Whenever it hit any shiny surface, जैसे ही light आती है और किसी shiny surface पे hit करती है, then what happen? It reflect, it bounce back. It can be refracted or bent when moving through a different media. तो क्या हुआ? Like suppose जब light आई और रिफ्लेक्ट कर गई, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. अभी सपोज दिस इज अनदर मीडिया, दिस इज अनदर मीडिया, सो लाइट गई और अंदर जाकर क्या हो गई? लाइट बेंट हो गई. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. वन बाय वन वी विल सी ईच वन ऑफ देम. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो बेसिकली देयर आर टू लॉज गिवन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? व्हाट आर द टू लॉज? The first is the incident, the light reaches to the plane surface. Now what is this? This is suppose a plane surface, right? So whenever the light reaches to the plane surface, this particular light is called incident light. ठीक है, इसे क्या कहेंगे? Incident light कहेंगे. And then ये जिस पॉइंट पे अगर लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है वहां पे आपने क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन. परपेंडिकुलर इज द नॉर्मल लाइन टू द सरफेस, द पॉइंट एट विच द लाइट रीचेस, राइट? एंड देन फ्रॉम हियर इट गोज बैक, इट बाउंस बैक. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गाइस, एंगल ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane. See, every line all in the same plane only. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट इधर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड इधर आ जाए. नो, अगर ये प्लेन है, इधर इंसिडेंट आ रही है ऐसे, तो रिफ्लेक्शन भी आपको ऐसे ही मिलेगा विद इन द सेम प्लेन. द सेकेंड लॉ सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट नाउ फ्रॉम द नॉर्मल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑलवेज जितने एंगल से हमारी लाइट इंसिडेंट होगी सरफेस पे, विद द सेम एंगल द लाइट रिफ्लेक्टेड ऑल्सो. ठीक है, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्दर वी कैन सी रिफ्लेक्शन इन रेगुलर और स्मूथ सरफेस ऑल्सो. लाइक व्हेनेवर द सरफेस इज स्मूथ विल सी अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. अगर सरफेस रफ होता है तो हमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, मतलब कहीं पे भी इधर उधर जाते. देयर वी आर नॉट सीइंग दैट प्रॉपर एंगल, दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. देन व्हाट इज मिरर? तो बेसिकली प्लेन मिरर इज व्हाट? मिरर इज व्हाट लाइक जिसमें आप अपनी फेस देखते हो, तो वो क्या है? एक प्लेन सरफेस है. मिरर इज व्हाट? अ प्लेन सरफेस. सो वी आर टेकिंग अ प्लेन मिरर. तो सपोज दिस इज द प्लेन मिरर. जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अगेन व्हाट हैपन? व्हाई यू आर एबल टू सी योरसेल्फ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो लाइट होती है ना, दैट रीचेस टू यू. ठीक है, लाइट आपसे कहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है? मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रही है. तो यू आर द ऑब्जेक्ट. आप क्या हो? ऑब्जेक्ट हो.
आपसे लाइट कहाँ जा रही है? फ्रॉम यू द लाइट रीचेस टू द मिरर एंड देन इट कम बैक टू योर आईज, ठीक है, वापस लाइट आपके आईज में आ रही है एंड देन यू आर एबल टू, व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट एंड कम बैक टू योर आईज, यू आर एबल टू सी योर इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, तभी आपको इमेज दिखती है ना। तो उसके लिए लाइट चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्यों देख पाते हैं? व्हाई वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट? बिकॉज ऑफ लाइट ओनली, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट पर जब लाइट टकराती है एंड देन इट कम्स टू आवर आईज, देन ओनली द इमेज क्रिएटेड ना। अभी अंधेरा हो जाए रूम में, वी आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज नो लाइट रीचेस टू एनी ऑब्जेक्ट, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रही है, तो हम कुछ भी देख पाते हैं बिकॉज उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है हम तक आ रही होती है। क्लियर? सो नाउ हियर व्हेनेवर द प्लेन मिरर forms image, it forms a virtual image. Virtual, you are not able to touch that image. That is the virtual behind the mirror. Erect with the same size, आपको अपनी ही size का image मिलता है. Laterally inverted, erect का मतलब सीधा आपको मिलता है, ठीक है, and laterally थोड़ा सा inverted मिलता है. So this is the characteristic of plane mirror. Now we have a spherical mirror. तो plane mirror तो हमारा ये हो गया, like suppose this is the plane mirror. Now if you are talking about spherical mirror, तो अब suppose करिए हमारे पास ये क्या आ गया, एक spherical mirror आ गया, ठीक है, ये पूरा क्या है, this is also the mirror but now this is spherical in shape. Okay, आपने क्या करना है, just you need to cut the mirror like this, ठीक है, आपको इनको कट कर देना है मिरर को. So whenever you cut the mirror like this, what you will get? You will get two things. One, you will get this image, right? Other, you will get this. आपको कुछ इस तरीके की मिरर बनती है, right? देखो, तो जब भी हमारी लाइट reaches to the this surface, right? अभी ये हमारा मिरर है, ओके, अंदर क्या है, सरफेस है, अंदर कोई थिक सरफेस है, तो हमारी जो लाइट है वो कहाँ पे टकरा रही है, रिफ्लेक्ट होगी, मिरर कहाँ है, बाहर की ओर है. तो जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं. ओके, अब सपोज करिए कि ये जो दूसरा पार्ट हमने लिया था, इसके दूसरे पार्ट में सपोज ये अंदर हमारी जो लाइट है, अभी क्या है, सपोज करो कि ये हमारी मिरर है, ओके, और जो लाइट है ना वो यहाँ पे टकराई और अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे. तो जैसे अपना हाथ है, जब अभी इसको आपने क्या किया, जस्ट मेक इट अ स्फेरिकल बॉल, अभी ये अलग हो गया. तो इफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस आउटर सरफेस ऑफ द मिरर, देन दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स. इफ द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द इनर सरफेस, देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ इमेज यू विल गेट व्हेनेवर द लाइट reflect from concave mirror, that one it can form real, inverted or sometimes virtual or erect image depending upon from where the object placed. So depending upon the position of object, you will get images like real or inverted image. Sometimes you will get virtual or erect also. When the light reaches to convex mirror, always you will get virtual, diminished and erect image, ठीक है, depending upon the position of object. तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट, यहाँ से you will get a question like what kind of image is formed if you are using concave mirror, if you are using convex mirror, right? Then the another, okay, one more thing is important for reflection. Always
the reflection phenomena takes place in a same media. ठीक है, यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता है. If the light reaches in a air, तो एयर में ही रिफ्लेक्शन होगा. You will get image in the air only. Okay, that this is different from refraction. Refraction में we are using two media. Okay. So what is refraction of light, guys? Refraction is the bending of light when it passes from one media to another media. Now suppose this is your media. ये आपका एक glass slab है. Okay? अभी क्या है? Light incident हुई. This is the normal line. So what happened? Now this is your air, or you can say rarer medium. Why this is the rarer medium? Because you know that in case of air, the molecules are free to move from one place to another place. So it's not very dense, they are not condensed. So the medium is rarer, right? But if it is a solid glass, so you know that in case of solid, the particles are very closely packed with each other, right? So what they form? They form dense media, right? So what you can say, this is denser media. This is the denser media and this is a rarer media. So for rarer media, you have a different refractive index. For denser media, you have different refractive index. The refractive index is depending upon the media only. So now what happened? Whenever the light incident, okay, over the surface from air rarer to the denser, then what happened? Within the denser medium, it bends. क्या होगा? लाइट हमारी बेंड होगी. रिफ्लेक्शन में इट बाउंस बैक, रिफ्रैक्शन में इट बेंड. अब देखो इसको जाना था इस डायरेक्शन में, बट थोड़ा सा ये बेंड हो गया, राइट? सो व्हाट यू कैन से, इट बेंड. सो बेंडिंग ऑफ लाइट यू कैन से व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये तो सेम वही वाला लॉ था. एक लॉ यहाँ पे आता है स्नेल्स लॉ, जो कहते हैं साइन एंगल आई. अभी ये हमारा एंगल आर है. साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो ये कांस्टेंट होते हैं. साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है. दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ रिफ्लेक्शन फिनोमेना you have learned in case of mirror. ठीक है, मिरर में आपको क्या मिलता है? रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. इन केस ऑफ लेंसेज यू आर एबल टू सी रिफ्रैक्शन फिनोमेना. अभी लेंस क्या होता है? हाउ यू विल गेट अ लेंस? तो नाउ जस्ट इमेजिन कि आपके पास क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है. यू हैव अ स्फेरिकल मिरर. आपने क्या किया? मिरर को कट कर दिया वापस से. फ्रॉम द टू साइड यू हैव जस्ट कट द मिरर. सो व्हाट अल्टीमेटली यू विल गेट? यू विल गेट दिस पार्ट, यू विल गेट दिस पार्ट. ठीक है, आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू मेक अ लेंस, यू जस्ट नीड टू ऐड दीज टू पार्ट. सो आपको क्या करना है? बस इनको ऐसे ऐड कर देना है. ठीक है, इधर वाला और इधर वाला. सो नाउ व्हाट हैपेंड? If the light reflected from outer surface, अभी यहाँ पे outer surface ही खुला हुआ है ना, यहाँ पे ही तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी. So this is what we called convex lens. ये हमारी कौन सी लेंस थी? मिरर थी. कॉन्वेक्स मिरर थी ना, तो कॉन्वेक्स मिरर, टू कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, टू कॉन्वेक्स मिरर टुगेदर जॉइंस एंड दे फॉर्म कॉन्वेक्स लेंस. सिमिलरली अब मान लीजिए हमें पता है कि ये अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो दिस इज आवर कॉनकेव मिरर. ठीक है, ये क्या है? अंदर लाइट हमारी आ रही है, तो दिस इज कॉनकेव मिरर.
अगर ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, दिस इज, ये भी हमारी कॉनकेव मिरर है, दो कॉनकेव मिरर है। अभी इनको हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, तो लाइक दिस, उल्टा करके, एक ऐसे और एक उस डायरेक्शन में, राइट, लाइक दिस, लाइक दिस। सो अगर लाइट यहां से आ रही है तो ये हमारी कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, ये यहां से आ जा रही है, कॉनकेव मिरर है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस यू विल गेट, यू विल गेट कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लेंस बन गई, कॉनकेव लेंस बन गई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ना? आई जस्ट मेक इट वेरी सिंपल कि अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, सो दिस इज द कॉनकेव लेंस। नाउ so we have two type of lenses, convex lens and concave lens. Convex lens you can make from joining two convex mirror. Converge rays, converging, convex lens कैसी होती है, converging होती है। converging का मतलब कि जो लाइट है हमारी coming from everywhere but they all converge at a single point। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कॉनकेव लेंस है, ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, लाइट गई यहाँ पे आई, लाइट आई यहाँ पे गई, ठीक है, सो फ्रॉम एवरीवेयर द लाइट रीचेस टू दिस पॉइंट ओनली। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ जा रही है, सो एवरी पॉइंट पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। बट जो हमारी कॉनकेव लेंस होती है दे आर डाइवर्जिंग, मतलब कि लाइट आती है और दे जस्ट, लाइट आई एंड दे जस्ट डाइवर्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमें डाइवर्जन देखने को मिलता है, द लाइट पूरी फैल जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म रियल और वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट यू विल गेट क्वेश्चन इन योर एग्जाम, किस टाइप का इमेज बनता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मिरर क्या होता है। एक और चीज आपको थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये आपका, सपोज करिए अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो सेंटर में ना, इसके सेंटर में आपको क्या मिलता है, पोल। और सिंस कि यू विल टेकन दिस फ्रॉम स्फेरिकल लेंस ना, स्फेरिकल मिरर से लिया है, तो इसका सेंटर होगा, तो हियर यू विल गेट अ सेंटर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेंस का सेंटर पोल कहलाता है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अगर इमेज आपकी जहां पे भी बनती है पोल से, जिस भी डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड focus, right, and from focus to the pole the distance is called focal length. ठीक है, इसको याद रखना। Then human eye, let's understand about the human eye. So you can say that our eye is also a kind of optical instrument, right? Your eye can also form an image, it is also a lens only. Okay, so basically our eye consists of various parts like cornea, iris, pupil, lens, retina and ciliary muscles. So what are the important functions of all those? This eye is again what? It is a spherical in shape, all right. Again this cornea is what? It is the outer transparent layer. तो जो outer transparent layer होती है ना लेंस के चारों तरफ बाहर, like suppose दिस इज योर आईज, ठीक है, तो इसके आउटर जो ट्रांसपेरेंट लेयर इसके एक होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, जो इस लेंस के चारों तरफ व्हाइट पोर्शन होता है ना, व्हाट इज द व्हाइट पोर्शंस वी हैव, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्क्लेरा। सो द व्हाइट पोर्शन इन आवर आईज इज कॉल्ड स्क्लेरा। ओके, कॉर्निया आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, आइरिस एंड प्यूपिल
कंट्रोल एंट्री, लाइट एंट्री। अब ये क्या होता है, सी हमारी जो आईज होती है, किसी की ब्लैक, somebody is having brown eyes, somebody is having green eyes, तो ये जो कलर है that is due to iris, because iris is a kind of muscles, iris muscles होती है, ठीक है, and within that muscles you have a melanin pigment. जितना ज्यादा melanin pigment होगा उतना कलर डार्क होगा आई का. lesser the melanin pigment, lesser dark the eye color. All right, so जो brown eyes हो रही है, किसी की black होती है, so जितना ज्यादा melanin pigment, it depends on the eye color. ठीक है, iris पे है. तो iris actually क्या है, जो black lens आपको दिखती है ना, black color की eyes, जैसे ये हमारी lens हो गई black, ठीक है, ये this is muscles called iris. तो ये जो पूरा पोर्शन है ना, this is called iris. Okay, now ये क्या है, what is this? This spherical, this ये जो होल होता है ना, इस होल को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं. इसे क्या कहा जाता है, प्यूपिल. ये जो अंदर आपको एक छेद सा दिखता है, होल सा दिखता है, that is the pupil. So pupil is actually a hole, okay, through which the light enters into our eyes. तो पूरे eyes में this is the only hole through which light enters and reaches to the retina. ठीक है, तो यहाँ इसी होल से लाइट जाएगी और रेटिना पे पास पहुंचेगी. ओके, सो नाउ जब भी आप ब्राइट लाइट में आते हैं, whenever you are in a bright light, तो क्या होता है, आपकी आंखें बंद हो जाती है. Why it does so? Because too much of light started entering into your eyes, right? So in that case, to prevent the entry of too much of light, your iris muscles contract themselves. Iris muscles क्या करेंगी, contract करेंगी. Due to the contraction of iris muscles, the pupil contracted. ठीक है, जो pupil है ना वो contract हो जाएगा. And due to the contraction of pupil क्या होगा, अभी ये जो आपकी होल थी ये भी एकदम छोटी सी हो गई, जिससे very less light will enter. Okay, अगर सपोज करिए लाइट चली जाती है, डार्क, for a second you are not able to see anything, but after that what happen, after some time slowly the light you enters and you are able to see the object in the darkness also. So why it happens so, in the darkness your iris muscles relax, dilate, you can say iris muscles dilate themselves, वो पीछे हटती हैं, so that the pupil becomes larger. तो अभी क्या हुआ, जो pupil है ना वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है. So अभी जितना एरिया, जितना ज्यादा बड़ा pupil होगा उतना light will enter, more light will enter, and then you are able to see the object in the darkness also. So this is the case how the pupil and the iris control the entry of light. Lenses. In our eyes we have convex lens. Our eyes is made up of convex lens, focus light into the retina, right? Retina is the inner layer of our eyes, right? And this retina, over the retina we have a rod and the cone cells, right? These are the cells which is used to receive the light. They are the photoreceptors actually. So within the retina we have a cells, photoreceptor cells, which receives the light coming from outside, and then from there the light reaches to the optical nerve. Via optical nerve it reaches to the brain and create an image. So that image forms over the retina and then we are able to see that image. So retina का काम है image बनाना. Ciliary muscles adjust focal length of our eyes. So now what are the basic function of our eyes is accommodation. Accommodation is what? Ability of eye lens to adjust focal length. ठीक है, accommodation क्या है, focal length क्या होता है, the focal length, the distance from the lens of your eyes to the image formed at the point.
जिस पॉइंट पे इमेज आपको देखना है उस पॉइंट से योर आईज के डिस्टेंस, लेंस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो योर एकोमोडेशन, आईज के पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ. Defect of vision, so we have various defects like myopia, hypermetropia, presbyopia. तो usually presbyopia occurs due to aging. जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, presbyopia होता है जहां पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है. Let me tell you first of all what is myopia and hypermetropia. This is important. Myopia is called as near-sightedness, right? Nearby objects are seen very clearly, but distance not. इसलिए myopia को हम क्या कहते हैं? Near-sightedness, right? That means you are able to see the nearby object, but as the distance increases, you are not able to focus. ठीक है, you are not able to make the image. So that is what we called your that means your eye is myopic. ठीक है, you are having myopic eyes. And for the myopic eyes, whenever you have a myopic eyes, the image is formed in front of retina. So here see what happened. The eyes become too long and image should form here in the retina, but image forms somewhere front of the retina. यहाँ पे image आपको मिल रहा है. So this is why you are having a near-sightedness. Can be corrected by using diverging lens. So what kind of lens you should use? Concave lens. Hypermetropia is known as far-sightedness. That means you are able to see far object very clearly, but the nearby object you are not able to see clearly. That means you are hypermetropia. Okay, far objects are clear, but nearby objects are not clear. Image is formed behind the retina. So in this case, image formed somewhere behind the retina. Okay, in case eyes are very short, and how you are going to correct this? By using convex lens. तो ये सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा. All the points are very important and you will going to get questions, guys. So in presbyopia what happened? Presbyopia के केस में दोनों ही प्रॉब्लम होती है, myopia and hypermetropia दोनों ही हो जाता है. So this is all about your light, right? Now let us understand about electricity. क्या होता है electricity? Now guys, first of all, electric current. ठीक है, electricity में we have a electric current. अब ऐसे समझो कि how the current generated first of all, right? So you all know that we are made up of atom, right? Atoms in having subatomic particle like electron, protons, neutrons. You have a positive charge particle, proton, you have a negative charge particle, electrons, right? So we all made up of positive and negative charge particles, right? अभी जो charges है ना, it's not like कि only we have charges. Whatever the particles in the universe, the whole universe is made up of atom only ना. Matter क्या होता है? Matter is anything which has some mass and which occupies some space in the universe. तो कोई भी पार्टिकल है, कोई भी गैस पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल है, every particle is made up of atom. Okay, so in the air also everything is made up of air, whatever the gas is. Air is a mixture of gases. Gases are made up of atoms, so they are also charged. Similarly, we have a liquid, solid and everything. So everywhere you have a charges and charges. Now these charges may be positive, these charges negative also, right? These are the charges, may be positive, may be negative. So whatever the charges we have, both the type of charges have electric field around them.
right? Electric field is meaning what? Area around the charge, ठीक है? अगर ये चार्ज है तो इसके आसपास की जो एरिया होगी ना, इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये जो हमारे आसपास की चार्जेस होते हैं, एरिया के चार्जेस के आसपास की जो एरिया होता है ना, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड, ठीक है, दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक field lines, right? They are represented by electric field lines. What is electric field lines? They are the imaginary lines, right, which comes out or go inside the charges. Like suppose if you have a positive charge Q, so from positive charge the electric field lines goes outward, ठीक है? यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर को जाती हैं. नेगेटिव चार्जेस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स इनवर्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम्स इनसाइड और यू कैन से इनवर्ड. सो दीज आर जस्ट द इमेजिनरी लाइंस बेसिकली. नाउ वी ऑल नो दैट whenever the two same charges comes together, they repel each other. Whenever the opposite charges comes together, they attract each other. So इसी की वजह से ऐसा होता है, due to this electric field lines only. अभी suppose एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकलेंगी ना, इनसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर ही निकलेंगी. सो बोथ विल रिपल ईच अदर, दोनों पास नहीं आएंगे. बट अगर कोई नेगेटिव चार्ज उनके अगल बगल आ गया तो पॉजिटिव से लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव में चली जाएंगी, ठीक है? अगर मान लो यहाँ से लाइंस निकल रही हैं, इट रीचेस टू नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन होता है. तो जब दो अपोजिट चार्जेस मीट करते हैं, अट्रैक्शन होता है. सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्शन होता है. तो ये तो बात थी चार्जेस की व्हेन दे आर स्टैटिक, ठीक है? अभी हम उन चार्जेस की बात कर रहे हैं जो अभी स्टैटिक हैं, एक स्टिल है. नाउ व्हेनेवर द चार्जेस स्टार्टेड मूविंग, ठीक है? अब सपोज करो कि आपने उन्हें बाहर से कोई पोटेंशियल दिया, कोई फोर्स दिया, कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया. ड्यू टू दैट पोटेंशियल, ड्यू टू दैट वोल्टेज, the charges started moving. So whenever the charges started moving na, they create electricity, they create electric current. तो अब सपोज करो कि आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है? इसको आपने एक पोटेंशियल V से जोड़ दिया, ठीक है? यहाँ आपने पोटेंशियल पावर दिया इसको. ड्यू टू दिस पावर, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल. तो अभी क्या होगा? पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, राइट? पॉजिटिव चार्ज रीचेस, एंड अभी क्या होगा? यहाँ पे पूरे पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, right? Now what happened? Within the conductor we have electrons, negatively charged electrons. So when the positive charge deposited here, all the electron moves in this direction, ठीक है? And the positive charge moves in this direction. The electric field due to positive charge is in this direction. Electron moves opposite to this direction, right? And then it causes current flow. इसी की वजह से करंट फ्लो होता है. तो अभी क्या होगा? चार्जेस यहाँ पे निकले, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, एंड देन इट कॉजेस करंट टू फ्लो. तो व्हाट इज करंट? करंट इज रिप्रेजेंटेड विद I, एंड I इज व्हाट? Q by T. At time T, how many charges, how many electrons flowing towards the positive terminal, that is create current. So electric current is what actually? It is just the rate of flow of charge. कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, that is the current in per unit time. Ampere is the unit of current. What is potential difference? It is the work done per unit charge. Like अब मान लो कि अगर ये दोनों एक बराबर होते तो they have same potential ना, but one is bigger, one is lower, smaller, then only the potential difference created between these two charges, right? So the potential difference created and then it causes charge to move. So potential difference is the work done per unit charge.
कितना वर्क लगा, कितना पावर एनर्जी लगा एक चार्ज को मूव करने में, दैट इज द पोटेंशियल, राइट. एंड if you compare the two charges, potential difference. So this is V by potential difference is what? W by Q. So how much work is done per unit charge? Volt unit is volt. So with this formula you may get questions, guys. Now what is Ohm's law? So basically Ohm's law is given for the conductor. Okay, Ohm's law is given for conductor, right? What are conductor? Conductors have ability to flow current because they have a free electrons. So Ohm's law क्या कहते हैं कि Ohm's law के according, like suppose this is your V, this is your V, this is your I, right? So they are constant, मतलब जितना वोल्टेज आप देंगे कंडक्टर को, ठीक है, उतना करंट फ्लो होगा. दैट मीन्स more the potential, more the current, less the potential, less current. तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट का फ्लो होगा. क्लियर? more the flow of current, more the potential, more flow of current. तो यही था ओम्स का लॉ. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए यूजिंग R. R is what? R is resistance. R क्या है? Resistance. Resistance represented by this sign. Okay. Now resistance क्या होता है? Resistance, it's like a obstruction which blocks the flow of current. अब suppose करिए कि आपके पास कोई वायर है and in that wire continuously the charge is flowing. Continuously the charge is flowing, and due to the flowing of charge, you know what, electric current is generated in the wire. So continuously the current is flowing in the wire, continuously current. So after some time your device will be fuse, or your device will not able to work, short circuit may happen. So what happened? We are using resistance in the wire. This resistance stops the flow of current. ठीक है, तो जैसे ही करंट रेजिस्टेंस पे पहुंचता है वहां पे करंट स्टॉप हो जाता है, फिर आगे कम इंटेंसिटी से करंट पहुंचता है. सो लाइक दिस रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट. सो दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. अगर कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में बहुत ज्यादा करंट है, दैट मीन्स इट हैज लो रेजिस्टेंस. एनी कंडक्टर हैज लो रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स लेस फ्लो ऑफ करंट. ओके, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए. रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी, व्हिच डिपेंड्स अपॉन द type of material, whether it is conductor, insulator or what. Insulator do not able to conduct electricity. L is what? Length of conductor. A is what? Area of cross section, right? So resistance are rho L by. Resistance depend upon length. More the length of wire, more the resistance. More the area of cross section, less the resistance. So like this you have to remember. इस formula से questions you will get. Then series and parallel circuit. What is the series and parallel circuit? So now suppose you have a wire, and in that wire you have added a resistance like this. So this is what we call a series combination, जहां पे हमने same potential difference, एक ही potential difference दिया, and what happens? See, इसी से हमारे सारे resistance connected है. From one point, एक wire ये, दूसरा wire, इसी से सारे resistance connected है. This kind of arrangement is called series. Now suppose this is your R1, R2, R3. So here what happened? If the current reaches all of them having what? इन सभी के पास क्या आएगा? करंट इनके पास सेम होगा, क्योंकि कोई जंक्शन नहीं है. तो everyone is having same current, but potential difference कम होता जाएगा. V is equal to V1, V2, V3.
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. Simply you have to add all the resistance and you are able to calculate the equivalent resistance. Again parallel combination. So suppose करिए this is one wire, this is another wire, this is another wire. इन सभी वायर को आपने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड व्हेन द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग, नाउ यहाँ से जो करंट आ रही है ये यहाँ पे भी आएगी I1, फिर यहाँ से जा रही है यहाँ I2 करंट आएगी, फिर यहाँ से चेंज हुआ I3. सो अभी करंट चेंज हुआ बट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो हियर वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल द ब्रांच. अभी यहाँ पे हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. So like this you have to calculate. I don't think they will ask you such questions because if you are from domain subject, physics is a domain, then though they will ask you. Otherwise, like if you are from any other subject, so only you should remember these formula. Okay. The series light, whenever the resistance arranged in a series, we are using in decorative lights, whatever the in Diwali and all we are using LED lights na. So there they are the wire, the current is in a series. In our houses, whatever the fan, bulb, tube light, TV connected, they all are connected parallel. Why? Because if our household appliances connected in a series, एक खराब होगा तो सारे खराब हो जाएंगे. That's why they are connected parallelly. Then we have a magnetic effect of electric current. So Oersted is a name of scientist. ठीक है. Now Oersted ने क्या बताया कि now suppose you have a wire. In that wire a current is flowing. I is equal to Q by T. Okay. According to Oersted, whenever a current is flowing in a wire, you know what? A magnetic field generated around the wire. ठीक है. वायर के चारों तरफ ना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, राइट. मैग्नेट क्या होता है? चुंबक, आप सबको पता है ना. सो नाउ जस्ट इमेजिन अराउंड द करंट कैरिंग वायर अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड. सो अभी वहां पे अगर आप सपोज करो कि ये एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों तरफ अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड. तो अभी यहाँ पे अगर आप कोई मैग्नेटिक कंपास रखते हैं ना, सो दे शोज डिफ्लेक्शन. द मैग्नेटिक निडल शोज डिफ्लेक्शन. दिस इज द Oersted experiment. Like from the electricity you can produce magnetism. So via electric current you can produce magnetic field. What is electromagnetic induction concept? Now this is the concept given by Faraday. Faraday says that by changing the magnetic field line induces current in a coil. अब ऐसे समझिए कि Oersted ने बताया कि अगर कोई करंट है, ठीक है, करंट में वायर है, करंट फ्लो हो रही है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी है. मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेट आएंगे तो दे अट्रैक्ट, दे डिफ्लेक्ट. तो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट. जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ठीक है, ये तो Oersted ने बताया. फराडे ने क्या कहा कि नाउ सपोज यू हैव अ मैग्नेट. आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है. कोई भी मैग्नेट अगर है तो अराउंड द मैग्नेट यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ अगर आपके पास कोई सर्किट है और उस सर्किट में अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बट व्हेन यू ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द सर्किट, नियर द कॉइल, always that means you are changing. Once you bringing more magnetic field, then you go back, then more, then go back. So जब आप magnetic field line change करेंगे near the circuit, near the coil, then the electric current generated in that coil. बात समझ में आई? From the electricity Oersted generated magnetic field.
Now Faraday from changing the magnetic field lower and higher, they generate electric current. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की वजह से आ गए, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई. सो इसका एप्लीकेशन क्या था? लोगों ने पूछा फराडे से कि क्या जरूरत है ये करने से. उन्होंने कहा कि अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी ना रही तो हम क्या करेंगे. सो इन दैट केस वी आर एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म. तो वॉट एवर द जनरेटर वी हैव, ठीक है, जो भी हमारा जनरेटर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ना, कि वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. देन इलेक्ट्रिक मोटर convert electric energy into the mechanical energy using electromagnet. Electrical generator mechanical energy को electrical energy में convert करता है. So these are the applications. Then magnetism and electromagnetism क्या होता है? Magnetism is just the nature of magnet. ठीक है, अब जो हमारे मैग्नेट होते हैं they may be natural, right? जैसे लोड स्टोन. लोड स्टोन नेचुरल मैग्नेट है, हमें नेचुरली अर्थ में लोड स्टोन मैग्नेटाइट के फॉर्म में मिला था. सो लोड स्टोन इज अ नेचुरल मैग्नेट. मैग्नेटिक मटेरियल, जो भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो मैग्नेट, जो एक्चुअल वाले मैग्नेट होते हैं, दे हैव अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट. ठीक है. अगेन मैग्नेटिक पोल्स. अब सपोज करो यू हैव अ मैग्नेट, ये एक क्या है, ये एक मैग्नेट है. तो कोई भी मैग्नेट होगा ऑलवेज दे हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, ये क्या है, चुंबक है, मैग्नेट है. एनी मैग्नेट यू हैव, एनी मैग्नेट, दे हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, तो अब अगर सपोज करिए आपके पास दो मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, देन व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रिंग the two opposite poles, they attract each other, and whenever the two similar poles brings together, they repel each other. Same thing जैसे चार्जेस में हुआ था. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड, रीजन वेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट. तो जैसे हमारे चार्जेस के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थे ना, वैसे ही फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड गोज आउट एंड टुवर्ड्स रीचेस towards the south. ठीक है. Similarly, north से निकलेगी south में जाएगी. Always the magnetic line comes from the north and reaches towards the south. Electromagnetism क्या होता है? Current carrying conductor produces magnetic field. So we have already understood according to the Oersted. Solenoid क्या होते हैं? अब सपोज करिए आपके पास एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है. यू जस्ट कॉइल द वायर. आपने उस वायर को गोल 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 घुमा दिया. ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर था, आपने उसको ऐसे ऐसे से घुमा दिया एंड यू जस्ट गिव अ सिलेंड्रिकल शेप. सो दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड. सो कॉइल ऑफ अ वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट. नाउ दिस वायर इन अ कॉइल फॉर्म बिहेव लाइक अ मैग्नेट. सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड अ सोलेनॉइड. So these are some of the basic concepts related to the magnet field. ये कुछ key formulas हैं. ठीक है, you have to understand, you have to remember these formula. Current के लिए unit याद रखनी है. Formula current, potential difference, Ohm's law, resistance, series parallel, power and energy. These are the important one. If you will get question, you may get from here only. At least जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतना तो आप याद कर लेना. More like from the book you will get, right? Also, if you want to read, just go for lucent, not in very detail, because in your GAT you will get not very much question, but yes, the basic questions you will get, so you have to understand all those. So with this, we are ending up today's session. I hope you are able to understand the concept, electric field, magnetic field, light and all. Okay, bye-bye.